So residential include heating, cooking, and the lighting, and commercial activities is just like it include the offices, hospitals, schools, and religious places, and warehouses, and shopping centers, and these are all come into the commercial activities. Okay. Then we come into the industrial sector. This is the major chunk of the energy consumer. That is industrial manufacturing sectors, and after that we go to the transportations, and in this ones include to cars, trucks, airplanes, ships, railway, and tractors and such. Okay. This one is a graph is about the world oil consumption by a sector. Okay, we find it the energy sector is one of the also not energy. Oh, I say that, sorry, transportation sector is the major one. So most of your transport, we can say that if we import the crude oil, so 70% of crude oil is mostly used in a transportation sector. Gasoline and diesel are the major commodities. Then we go to the oil gas value chain. Here we found it that in each section, the storage play a very important role. Then after that, we discuss the size of the storage. We say that the size of storage is directly uh, proportional to the cost. If the cost is if the size is, if we design a larger size in per area, then the cost is decreases. So small, we can say the here is idiom use that is smaller is a square and big is beautiful. Then we discuss about the energy content. We discuss that on energy content, crude oil is one of the best as compared to the coal and such thing, and they have a good energy value as compared to the highest grade of coal, anthracite. Okay, then we also discuss where the what type of coal, where the coal find, what are their grades. So we categorize that the coal, especially in the Balochistan region, that is a very good quality. That is a categorized into a bituminous quality. Okay, and the mostly coal which we have the highest, largest deposit in the core quality is the lignite quality. So it's quite very poor quality one. Then we also discuss about the gas that free gas have no energy value. We can compress the gas and we can increase its energy value. Just like we can give the example, we can say that if we use the gas into the car, we use a free gas, then it's not very good. They have, it's very difficult not to start your engine for a car. So what can we do? We can compress this gas. So that's why the word CNG is come out, compressed natural gas. Okay.
Then one of the most interesting, we talk about the energy transitions. So we say that so there is a two thing. First is one in the early 19th century, in the late 19th century, there is a transition of from wood to coal, and in the mid 20th century, and there is a transition of from coal to petroleum, because petroleum is quite very cheap as compared to coal, and is more. The reason is behind it is more energy content. That's the reason is that, and the reason behind the decrease in wood, because the size is larger and the energy is not as good as compared to the coal, and the wood will be turning into the more expensive one at that time. So after that, another figure number 6, we discussed the oil prices and world economic growth. Okay, we say that as the prices of coal is increases, then the world economy is facing recessions. Okay, and when the prices is decreases, there is a good stability, and we can say that what the other categories we can say that. So the reason is behind that, we can say that so we can say that the graph is that uh, higher the oil prices, is we contributing the economic recession, and the lower prices is just like stimulate or enhance your global economy. So this is, we can say, quite a common. For example, not all country in the world are not an oil producer. Okay, there is a few chunk of the country which are the oil pro. So when the prices of this oil producing country, they get an economic boost. Okay, they earn a lot of revenue. But on the other side, if the oil import country, they spend their lot of revenue on oil, on importing the oil. So it might be hurt the economy, just like we are recently facing the recession, the period of, because after the COVID, and we are on COVID
time, whatever the prices are low, but whatever mostly because the reason the whole world is shut down due to the we can say that due to some health issues, or we can say that some microbiological reason that the virus and something is. So that whole world is just like the stagnant. That whole world economy is just like a stagnant. It's just stop. Shit, your industries stop. After that, what happens? Suddenly, the 22 the Russia-Ukraine war is started. So Russia-Ukraine war, suddenly the prices are increasing. The oil prices are increasing, and there is a every world in the world there is a high the inflation is increases. So especially country like Pakistan and Turkey, uh, Sri Lanka, Argentina, and some other few countries where the inflation rate, some 10 or 15 countries, where the inflation rate exceed to 25 plus. I think in Turkey, the inflation is at 80, Sri Lanka is some 60, and Pakistan is currently, some say that 35, or some say that other economists say that it is a 45. So we are not getting some real figure and such thing. But we find it the people are facing a very hardship. Okay. So beside this, there is other incidents just like Russian Ukraine incident. Before that, there are other that incidents in during 90s, 60s two or something. There's a Arab-Israel war when the oil producing countries they stop their production and export their oil to the West. So again, there is again the prices is rises and such thing. This is also the world facing a recession time. After that, the Gulf War when started in 91 when Iraq invaded the Kuwait. So uh, at that time, and also in 1979 or something, there's Arab and Iran Iraq war also too. So these are the some will say that is how the politics involved and how the prices is rises. Okay. So we again here the word is coming out that at a national level, oil matters. Whether a country is importer or exporter, for oil importer, oil is often a major drain on the balance of payment and has a positive correlation with the inflation rate. So the word here the coming out the balance of payment, we always say balance of payment means that uh, there is just like we can say that the international pay. So whenever you pay the some internationally, so either you export or import is come into the balance of payment. So it's just like reflecting the country trade with the rest of the world. So miss
if you importing the oil and such, so your major drain, your investment or whatever, they come fall into the major drain in the balance of payment. Okay. So in this one, there's a balance of payment deficits and the balance of payment surplus. So in deficit categories, we can see that country imports more goods, services, and capital than it exports. So it must borrow from the other countries to pay its import in the short term, the fuels and say. This is a pure example of Pakistan. Whatever our export is not such a good. If we can say we can import a lot, just like we can import the especially luxury of our ministers, examples, and all the things just like cosmetics and such thing. Recently, what happened? I think a few months ago that they some categorize Mifta Ismail, I think that period that they have to put the category that these items should be taxed or this item import item should be there is a thing is coming out the food item for the pets. So they say that these items should be a ban. There is a lot of voices connected to why the pets are suffering because people are keeping the cats and dogs. If they give them the imported food and such, if they stop it, there is no any national product or not our local product. We can manage it to give the animals. So there is after that they remove that category to why the poor animal is suffering. So, if, for example, if you go to the any supermarket and Imtiaz or whatever, you can find there is a section of especially the pet food. You can find different variety for the cats and dogs food there. Okay. So these are the deficit and the surplus. Surplus is just like the country export more than its import. Just like the categories uh, either it is a capital or domestic production or it will also boost the economic growth in the short terms. So if we can see the oil exporting countries, just like petrol is the main commodities. But if we see the other countries like non-petroleum countries like Singapore is a good example, which is a quite, I think, about Singapore is just like half the population of Lahore, but I think, its economy is quite very. So we can economy is quite very bigger than Pakistan. So it's a very small country, but it's not oil exporting, but the major export is the services, tourism industries. These are the major. We can say that. A major part of the economy. Okay, some country like just like investment destinations. So what happened? These are the very smallest country. You have to invest in this country. Either they give the nationality or such thing, and it's not just like some hundred. You can pay the some $100,000 and they give the rest. So this is also part of the strategy that you can invest in a country and you can get a passport and that passport you can enter into the EU or US without any visa. So these are the also some people do it, the big businessmen and millionaire people in especially country like Africa, Pakistan and India also.
So it also raises the important concerns over import dependence and supply security. So, Miss, this is the thing we are talking about, the balance of what balance of payment. Okay, balance of payment, which decided how much you export it and how much you import it. Okay, this is just like a check and balance, international check and balance. Okay, this figure is there that when you can't hide this because this is the international, you can't hide it. Okay, so for oil exporters, so for oil exporter, while it may be a large scale oil export are a benefit, but they can cause a problem. The country can be become the dependent upon oil revenue, therefore the vulnerable to the fluctuation in the oil prices. Sometimes it is quite very place if you countries totally depend on oil based economy. If the oil prices increases, then that countries uh, get a lot of benefits and certain. If the for example the oil prices is suddenly the fall, then it hurt the economy also. So sometimes we can say that we can say that this is quite a negative effect of on the economy. Sometimes it's called as the resource curse. While this sometimes and they have to these countries to avoid such becomes into such type of issues. So they might be think about some others to how to generate their revenue in some other way, not dependent on the oil. Okay. So large scale revenue can also damage an existing economy, just crowding out the manufacturing sectors and agriculture. This can be resulted of two, oh sorry, sorry. Uh, so large scales revenue can also damage an existing economy, crowding out the manufacturing sector and agriculture. This can be result of too much government involvement in the economy as the government dispenses the uh, sorry, the oil revenue. Okay, so here the word is coming out, crowding out. So crowding out is a situation when you increase the interest rate and when the interest rate is increased, what happened that your private is investment and such thing with government, whatever that government is something in, get some loan or such thing, and because of loan they have to increase the interest rate. So that interest rate is also affect the private investment. So this is the reason we call as a crowding out effect. This is the example we can see it in our country. Just like we have to uh, getting the loans or such thing, the government is getting the loan. Once the government is getting the loan, so what happened that we can say that it increased the interest rate because to pay the once you getting the loan, so you have also pay the interest also. जैसे आपके यहाँ कोई एक स्कीम नहीं थी मेरे ख्याल से कौन सी एक स्कॉलरशिप आई फॉरगेट अबाउट द स्कॉलरशिप स्कीम दैट जिसमें स्टूडेंट आई थिंक दे गेटिंग द लोन एंड आफ्टर दैट they spend the money and something. Finally, they realize that they have to pay back the loan.
I forget about it because मेरे पास ऐसे एक तो केसेस आए थे, स्टूडेंट ने कहा था जब डिग्री लेते वक्त उनको दे हैव टू पे अबाउट, लोन तो ले लिया था क्योंकि फिर उसको बाद में पता है का, आई फॉरगेट कौन सा लोन था, आपको किसी को याद है क्या? कोई प्राइम मिनिस्टर का मेरे ख्याल से कोई लोन की ऐसी स्कीम आई थी, एनीवन हैव आइडिया अबाउट इट? आर यू अलाइव? सुन रहे हैं आप लोग? यस सर, यस सर, सुन हाँ, रहे हैं। तो वो कौन सा स्कॉलरशिप में एक कोई आया था, एक टाइप का ऐसा लोन, क्योंकि आप जैसे बच्चों ने लोन वगैरह लिया था आखिर में उनको बाद में पैसे भी देने के, वंस यू गेट द डिग्री और समथिंग। आई फॉरगेट अबाउट इट, क्योंकि नहीं ऐसे लिया पता तो इस शायद। बारे हाँ? सर पता नहीं, इस बारे में स्कीम तो आई थी लेकिन उसके बारे में पता नहीं है ना, वो लिया था ऐसा कुछ। अच्छा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने मुझे इस टाइप के केसेस आए थे, ये स्पेशली इसके आए थे, 17 पेज के थे, वन से, हाँ 17 के थे, 18, हाँ 17 या 18 के थे इस टाइप के केसेस, 17 के स्पेशली। कुछ स्टूडेंट वो स्टक हो गए आखिर में, तो के उनको लोन वाकई में पता चला कि लोन भी इनको देना। तो मैं इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी लोन ले देते हैं, ठीक है, लोन देते हैं तो आपका क्या होता है कि उसके साथ साथ फिर आप माने जैसे एक कुछ लोन होते हैं ऐसे, जैसे इमरान खान की एक आई थी हाउसिंग स्कीम वाले, वो बड़ा एक अच्छा स्कीम थी जिसमें लोग पता है अपना घर, पता नहीं क्या था उसके, उसका जो इंटरेस्ट रेट था वो थोड़ा सा कम था मेरे ख्याल से, 7, 8 या 10% से कम था। बाकी जो वो दूसरे, जैसे अगर आप कहीं से हाउस बिल्डिंग फाइनेंस से लोन लेते घर के लिए, उनके इंटरेस्ट 18+ थे, मैंने आपको इस किस्म का, कि आप फर्स्ट करो थे। तो मैंने ये होता है कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट ये होता है कि आपका क्या होता है कि द गवर्नमेंट इज टेकिंग अ लोन, हमें लोन तो लेते हैं, हमें लोन भी पे करना पड़ता है कि हाउ वी कैन पे, वो पे कैसे होता है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। तो इंटरेस्ट रेट ये होता है कि गवर्नमेंट वगैरह तो आपकी इंटरेस्ट रेट, अब फॉर एग्जाम्पल पहले आप गाड़ी अगर लेते हैं लोन पे, कोई गाड़ी लेते हैं बैंक से, तो उसका इंटरेस्ट होता था मेरे ख्याल से आज से तकरीबन शायद 7 या 8 साल की मैं करूँ या 5 साल पहले की बात करूँ, तो इंटरेस्ट उसका शायद कम होता था, नियरली 8%, 7% ऐसे कुछ था। फिर उसके बाद 2 साल पहले जो अगर गाड़ी बैंक से लो तो उसका इंटरेस्ट रेट है सब ज्यादातर 40 to 50 के पास बेच रहे हैं। अभी तो शायद गाड़ी अगर आप ले तो उसका इंटरेस्ट रेट शायद 20 के आसपास होगा। तो बड़े इस तरीके से आपकी जैसे इंटरेस्ट रेट बैंक वगैरह भी, उनके पाकिस्तान हैव द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट, इफ श्रीलंका है 16, 10 पाकिस्तान है व्हाट, मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सोशल मीडिया से पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट इज 20%। तो मैं उसमें क्या क्या कि उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि जो प्राइवेट बिजनेसेस वगैरह होते हैं उनको इफेक्ट होता है, कि जो प्राइवेट टाइप के, वो अपना क्या कहते हैं वो मनी वो सही तरीके से वहां पर, जैसे कोई आपने बनाया कि वहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने की वजह से कि उनको कि हम इंटरेस्ट रेट देना पड़े, हम यहाँ पर कोई इन्वेस्ट करें फिर हमें उसके बाद इंटरेस्ट रेट इतना देना पड़े, तो इसकी वजह से वो इन्वेस्ट नहीं करती वहां पर। तो दिस इज नॉट अ फिजिबल physical environment to invest it. So that's we called as the crowding out effect. ठीक, समझ में आ गया crowding out effect. So this is the more category. I think the more interesting thing that if you search on the YouTube and such thing, you can getting a more and more uh, information about the crowding out also. ठीक, इस टाइप के में एक तरीके से ऐसे भी आ सकते हैं कि अगर पेपर वगैरह दूं तो जैसे टर्मिनोलॉजी आती है क्राउडिंग आउट की, आर्बिट्री की, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या है, तो यू हैव टू राइट द डेफिनेशंस ऑफ डिस्क्राइब दैट टर्म्स, 4-5 उसको यू हैव टू राइट इन अ डेफिनेशन आल्सो। तो इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, जैसे मैंने एक लास्ट टाइम कि फर्स्ट करो मैंने एक रीजन दिया कि फॉर एग्जांपल आई पुट द ग्राफ एंड सच थिंग, जैसे आपके इसमें आए थे कि ऑयल प्राइस का क्या है, व्हाट द रीजन बिहाइंड इट, कि किस तरीके से आप बताएंगे क्यों ऑयल प्राइसेस इफेक्ट करती हैं। यू हैव टू डिस्क्राइब द रीजन, दैट इज
2 or 3 लाइंस आपको अपने लाइनों में लिखनी पड़ेगी कि डिस्क्राइब इट टू द ग्राफ एंड सच थिंग. So then it can also a result of bad attack of just like we can say that Dutch disease. तो डच डिजीज एक्चुअली क्या है कि तो डच डिजीज तुम्हारा पता ही चल जाता है कि दिस टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी इज कम आउट फ्रॉम द कंट्री ऑफ हॉलैंड. माना ये डच हॉलैंड या नेदरलैंड वालों को ही कहते हैं. ठीक है, वहां पर एक प्रॉब्लम निकल के आती है डच डिजीज. डच डिजीज इज नॉट जस्ट लाइक कोई कोविड या क्या कोई कोरोना या क्या कहते हैं कोई बर्ड फ्लू या कोई इस टाइप की या प्लेग वगैरह इस टाइप की डिजीज. दैट इज अ इकोनॉमिकल टर्म है. एक क्या हुआ कि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कि इस टाइप का एक एक्सपीरियंस देखा गया कि एक आपके पास मिनरल रिसोर्सेज आपके पास वो माना एक क्या बनते कि हम कहें कि मिनरल रिसोर्सेज वो आपके पास बेनिफिट की जगह पे वो कर्ज बनना शुरू हो गए. तो क्या हुआ था कि दिस इज experience that they have found a major discovery and major discovery in 1960 गैस फील्ड. एक अच्छी खासी उनको गैस फील्ड मिल गई तो उनको उन्होंने डेवलप किया वो किया वहां से प्रोडक्शन लेना शुरू हो गए. तो इस गैस फील्ड से तो क्या हुआ शुरू के तो 10 साल ठीक थे. फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने क्या हुआ कि उनकी इकोनॉमी थी कंट्री का सारा कैपिटल वगैरह टू वर्ड्स वहां पर उन्होंने दे हैव टू फोकस ऑन दैट वन ऑन ऑयल. ऑयल के ऊपर उन्होंने रेवेन्यू वगैरह वहां से उनके ऊपर. तो क्या इनकी कंट्री की जो क्या करेंसी वैल्यू थी वो कर दी ओवर वैल्यूएशन. ठीक है, एक्सचेंज रेट उसका ओवर वैल्यूएशन हो गया. सो जैसे हमारे यहाँ डीवैल्यूएट होती है तो ओवर वैल्यूएशन. तो मैं कभी कभी क्या होता है कि डीवैल्यूएट कोई कंट्री अपनी इकोनॉमी को करती है वो एक्सपोर्ट बूम करने के चक्कर में तो वो डीवैल्यूएट करती है. तो कभी कभी क्या ओवर वैल्यूएशन की वजह से भी आपकी इकोनॉमी को इफेक्ट होता है क्योंकि फर्स्ट आप कोई भी चीज बाय करते पहले आप 2 रुपए की आती थी अब वो चीज महंगी हो गया वो 4 रुपए की आनी शुरू हुई. तो इसी तरह के ओवर वैल्यूएशन एक्सचेंज की वजह से उसकी जो मेजर एक्सपोर्ट थी जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब और दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह वो वहां पर क्या हुए क्राउडिंग आउट हो गई. मतलब वो एकदम लेबर महंगा हो गया उनकी प्रोडक्ट महंगी हो गई. तो उन्होंने क्या हुआ कि वो बंद हो गई या तो उन्होंने स्विच ओवर हो गए कि दूसरी तरफ वो चले गए क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई. फॉर एग्जाम्पल एक उनकी कार ऑटोमोबाइल का एक सेक्टर था. तो ऑटोमोबाइल पहले फर्ज करो कि वो उनकी गाड़ी 10,000 यूरो में जाती थी अमेरिकन मार्केट या अदर मार्केट में. जैसे उनकी करेंसी की ओवर वैल्यूएशन होने की वजह से तो वेजेस वगैरह तो वही कार क्या कहते हैं उनकी $20,000 में बिकना शुरू हुई दूसरी कंट्रीज में उन्होंने जब एक्सपोर्ट करना शुरू. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब लोगों ने देखा कि अगर वही कार उनको एक कार मेड बाय द डच वो उनको 20,000 के वही कार अमेरिकन कार फोर्ड टाइप की गाड़ी वो उनको 10-15 हजार डॉलर की मिल रही तो दे हैव टू प्रिफर. तो भाई क्या हुआ उनकी प्रोडक्शन की डिक्लाइन हो गई प्लांट तक के. तो भाई उनका क्या हुआ कि उनके जो मेजर हब थे कि उनका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वो चीजें थी दे आर जस्ट लाइक स्क्वीज आउट होना शुरू हुए होंगे. तो ये आज तक ये एकदम से तो नहीं 10 साल के बाद 70 में उन्होंने एक एक्सपीरियंस करना इकोनॉमी जब उसकी हो गई. फिर उसके बाद 70s के एंड में उन्होंने एक्सपीरियंस करना शुरू कि उनकी इकोनॉमी एक तरीके से श्रिंक हो रही है. तो उसकी वजह से दैट इज कॉल्ड एज द डच डिजीज. उसकी वजह से तो उन्होंने सारा का सारा फोकस क्या कहते हैं उन्होंने इसके ऊपर लगा दिया ओवर वैल्यूएशन की वजह से उनकी क्या हो कि जो एक्सपोर्ट थी जो नॉन हाइड्रोकार्बन एक्सपोर्ट थी कि वो उनकी कम होना शुरू हो गई कि जैसे उनकी मेरे क्या कि उनका मैन्युफैक्चरिंग थे और एग्रीकल्चर थे उनका
तो वो उसकी डिक्लाइन होना शुरू हो गई। उसकी डिक्लाइन की वजह से क्या हुआ कि जो उनका उन्होंने कंट्री ने अपना फोकस कर दिया ऑयल एक्सपोर्टिंग की तरफ, ठीक है। सो उन्होंने अपना ऑयल उसको तो ऑयल एक्सपोर्टिंग की प्रोडक्ट वो उनकी ज्यादा से ज्यादा होना शुरू, तो उनको ज्यादा रेवेन्यू आ रहा था, उन्होंने उनके ऊपर फोकस किया। तो बाकी जो रिमेनिंग सेक्टर था वो उनकी इंपोर्ट कम होना, एक्सपोर्ट कम होना शुरू। तो एक ये भी रीजन था, ठीक है। सो ये केस हॉलैंड में भी देखा गया था, हॉलैंड या नेदरलैंड में देखा, इसी तरीके का केस एक यूके में भी देखा गया था, ठीक है। मगर ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए थोड़ा सा क्या कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है ज्यादातर, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री के लिए कब होता है क्योंकि उनकी इकोनॉमी मोस्टली डिपेंडेंट है कि वो एग्रीकल्चर बेस्ड। तो हमारे यहाँ तकरीबन जो इकोनॉमी हम कहें कि आपका अगर देखा जाए आपकी 60% एग्रीकल्चर बेस्ड है। इसी से अगर इंडिया की भी देखा जाए तो वो भी नियरली 50 या 45% वो तकरीबन 40% वो नियरली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी बेस्ड है। वहां पर इतना फर्क नहीं होता, मगर स्पेशली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहां पर आपको फर्क आ जाएगा कि क्योंकि अगर एकदम से ऑयल प्राइसेस वहां पर अच्छी इंक्रीज थी, क्योंकि वो टाइम भी ऐसा था 60s के दौरान के एकदम से मेगा अरब इसराइल वार की वजह से जब ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो गई, तब तो उनको बड़ा अच्छे बेनिफिट हुए। फिर सडनली आफ्टर 70s के बाद जब ऑयल की प्राइसेस कम होना शुरू हो गई, उन्होंने अपना सारा का सारा फोकस उसी के ऊपर लगा हुआ, तो उसकी वजह से ओवर वैल्यूएशन और नॉन हाइड्रोकार्बन एक्सपोर्ट जो थी उनकी वो फॉल होना, इसकी वजह से उनको इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया। सो मैंने एक ग्रोइंग इकोनॉमी से उनकी वो डिक्लाइन की तरफ चलना शुरू हो गए। सो दिस इज द एक्सपीरियंस ये देखा गया। सो दिस इज ऑल बिकम द केस स्टडी, ये केस स्टडी बन गया, ठीक है। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी ये आप देखा जाए कि sometimes there is a debate or argument on the CPEC projects। क्या ये डिस्कस है कि CPEC प्रोजेक्ट ये पाकिस्तान में क्या ये विल बी लीड टू द डच डिजीज पर कि आपके CPEC में आपके एक अंधाधुंध बनी आना शुरू हो गई कि आपके आपको सब आई थिंक सब $68 बिलियन चाइना चाइनीज इन्वेस्टमेंट और CPEC प्रोजेक्ट्स, ठीक है। 870 बिलियन वो धड़ाधड़ पैसे आना शुरू है। मगर ये नहीं आएगा कि वो पैसे आए तो सही, मगर आखिर में यू हैव टू पे बैक देम। आपको तो वो तो उन्होंने गिफ्ट मनी तो नहीं थी 70 बिलियन, आपको तो वो वापस भी दे रहे हैं। तो अब वापस देने के लिए कि अब आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी आपकी, वैसे भी आपकी एक्सपोर्ट तो हमारी एक्सपोर्ट तो डिक्लाइन हुई, मैं इसके ऊपर भी डिबेट चल रही है कि CPEC project away, just like the same example is happening into the Sri Lanka also। कि उन्होंने उनके पास भी धड़ाधड़ वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में धड़ाधड़ पैसे मिलना शुरू हुए। देन दे बिल्डिंग का वेरी हाई राइज बिल्डिंग एंड मॉल्स वगैरह होटल्स वगैरह ये बनाए। तो उन्होंने जो मेजर थिंग थी इसकी वजह से लैग बिहाइंड है। आफ्टर दैट दे हैव टू पे बैक द लोन। जब लोन पे नहीं कर सके तो चाइना ने उसकी जो पोर्ट थी हम्बोटोटा पोर्ट, दे विल बी टेक इट आउट फॉर 99 इयर्स के लिए वो उन्होंने पोर्ट और एयरपोर्ट हो गया। तो मैंने ये तो उसके लिए ये है कि आप या तो आपके पास इंटरेस्ट आता है, आप कोई कि यू हैव टू बेटर कि आप उसमें यू हैव टू सेटअप द ऐसा यूनिट सेटअप करेंगे जिससे आपकी कंट्री की प्रोडक्शन हो, आप उसको एक्सपोर्ट करें, आपकी इसमें रेवेन्यू जनरेट हो, तो वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू क्रिएटिंग अ डैम, ठीक है, डैम्स विल प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी विल बूस्ट योर कंट्री इंडस्ट्री। आपकी कंट्री की इंडस्ट्री को बूम करना शुरू हो गया, इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल सेक्टर्स वट एवर द सेक्टर्स, ठीक है। तो उससे क्या आपके टेक्सटाइल है, आप तो एक तो उसकी एक्सपोर्ट, एक तो उसकी कंट्री में कंजप्शन और दूसरे उसकी एक्सपोर्ट करें, तो एक्सपोर्ट आएंगे तो एक रेवेन्यू जनरेट होगा। तो दिस इज द वे, ठीक। तो ये भी एक रीजन है कि many countries they are just like think that
all the Chinese product, they are just like make their country to the what is that Dutch disease. Okay. ओके, फिर उसके बाद हमारा अब पहले हमने तो जनरल की बात की, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, ठीक है, ऑन द पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी बेस्ड, ठीक है। अब एक्सप्लोरेशन, तो आपको पता है कि हम एक्सप्लोरेशन स्टेजेस, डेवलपमेंट स्टेजेस में, एक्सप्लोरेशन स्टेज में आपके सारे के सारे वो जियोलॉजिकल सर्वे वगैरह, एंड यू गो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वेल और सच थिंग, ठीक है। तो एक वो होती है डेवलपमेंट में, सॉरी आप क्या कहते हैं, वाइल्ड कैट वेल आप एक ड्रिल करते हैं, ठीक है। आप उसमें आपका ड्रिलिंग वगैरह ये सारा प्रोडक्शन, जब आप उसकी रिजर्वायर सेक्शन या प्रोडक्शन आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वी कम इनटू टू डिस्कस अबाउट दैट पार्ट, ओके। सो the deposit usually consists of gas, oil, and water contained within the porous rock to allow their movement. ठीक है, we already know exploration में क्या कि gas and oil are contained in the porous rock to allow their movement. The whole deposit is under pressure and the pressure is contained by the gap rock. That is the impermeable layer. ये सब हमें phenomena पता है, ठीक है। तो sometimes क्या होता है कि in these cases we can say the oil is there is a seal and therefore it must be formed. That require the how we can find the oil, we can find by the geological and geophysical survey to be carried out to determine the underground geological zones. Okay, so once we can find that underground, so we go for the geophysical survey. That one is a magnetic or seismic, or latest today the more like most expensive like a 3D or 4D survey, which gives you the more accurate result. So this is we can say that the development of computer technology, or we can say the artificial intelligence, so have allowed to use of three-dimensional seismic or four-dimensional seismic. It gives a more accurate result. And okay, so once the field is processing, so field is the only on the only way we to जब सब आपके सर्वे वगैरह हो जाते हैं, आपकी पता चल जाता है, तो उसके बाद हम क्या कहते हैं कि जब हमें पता चल जाता है यहाँ पर है आपके रिजल्ट, तो we can know about it, there is the presence of oil and gas there, so we have to drill the exploratory well, and that well we call as a wildcat well. Okay, ये तो आपको पता है वाइल्ड कैट वेल क्या होता है, ठीक। उसके बाद आपके आते हैं क्या कहते हैं, हम आपके बात करेंगे, उसके बाद आ जाते हैं एक्सप्लोरेशन रिस्क आ जाते हैं, ठीक है। अब एक्सप्लोरेशन रिस्क में आपके आ जाते हैं द फैक्ट दैट ऑयल इज हिडन अंडरग्राउंड गिव राइज द थ्री टाइप ऑफ रिस्क। वो थ्री टाइप के रिस्क आते हैं। वो थ्री टाइप के रिस्क कौन कौन से? एक आता है, फर्स्ट आता है द प्रोस्पेक्ट रिस्क, ठीक। So prospect risk is that this risk that the well will fail to find the hydrocarbon in commercial quantity, that the wildcat well will be a dry hole. Because of but recently the improvement of the technology, the risk of dry hole has fallen. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता है, आपकी जो रिस्क फैक्टर है द प्रोस्पेक्ट रिस्क,
is become fall. पहले आपका था 20:1 था, जैसे जैसे मोर टेक्नोलॉजी आ गई फिर 10:1, मोर जस्ट लाइक 3D सर्वे वगैरह आना शुरू हो गए, फिर आपका वो रिस्क फैक्टर हो गया कितना, नियरली 3 or 4:1. ठीक, जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट ओके, सॉरी वंस अगेन. ठीक. So what happened that due to the presence of prospect risk, that lead to the change in the agreement that form the basis by which the oil company explore for and how to explore it and how to produce it. So sometimes these changes have been aimed at putting the prospect risk in the oil company. They go for the joint venture or services agreement. If no commercial oil is found, the loss falls entirely on the company and the government does not lose anything. ठीक. अब इसमें क्या होता है कि ये प्रोस्पेक्ट रिस्क होने की वजह से कि क्या होता है, कभी कभी ज्वाइंट, आपने अगर देखा होगा कि ज्यादातर कंपनियां नहीं ज्वाइंट वेंचर के साथ करती हैं, कि कहीं पर आपके ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहां पर पीपीएल भी है, साथ ही साथ आपकी यूईपी भी है या कोई एक दूसरी कंपनी, इस तरीके से वो ज्वाइंट वेंचर से करती है कि फर्स्ट को अगर कोई भी इस टाइप का रिस्क है वहां पर कहीं पर गवर्नमेंट की भी होती है फंडिंग वगैरह, तो थोड़ा बहुत, क्योंकि फर्स्ट को करके अगर इस टाइप का प्रोस्पेक्ट रिस्क टाइप का आता है कि आपका बेड ड्राई आउट होता है, तो कम से कम जो उसका जो लॉस है वो एक गवर्नमेंट को या कंपनी को वो लॉस का एक तरीके से थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है, तो सस्टेनेबिलिटी होती है. जैसे हमने ड्रिल किया था वेल, क्या कहते हैं, ऑफ शोर पर, ठीक है. अब ऑफ शोर पे क्या था कि वहां पर आपके पीपीएल थी और उसके अलावा एक दो दूसरे जॉइंट वेंचर के साथ कुछ बाहर की कंपनियां थी जिसके साथ एक उन्होंने वेल ड्रिल किया था वहां पर, ठीक है. तो वहां पर जब वेल ड्राई हुआ तो मैंने एक मिनिमम उसका रिस्क है, क्योंकि आप वहां पर तो और ज्यादा खर्चा होता है. पहले तो आपका खर्चा होता है, सर्वे करते हैं वो करते हैं, उसके बाद ड्रिल करना, ड्रिल में आप जो कॉस्ट आपकी लगती है जिसको हम कहते हैं सिंक कॉस्ट, तो वो भी एक तरीके से सिंक में जो कॉस्ट आपकी जो लगा है वो आपको वापस तो नहीं मिलती, तो उसका भी खर्चा पड़ता है, तो इसके कंपनी समटाइम वो जॉइंट वेंचर की तरफ जाती है. ठीक, वो इसकी वजह से गवर्नमेंट वगैरह इस तरीके से करती है कि हमें कुछ लूज ना पड़े कि हमारे कुछ इफेक्ट ना पड़े, तो इसकी वजह से दे गो फॉर द जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट्स. ठीक है, ज्यादातर.
So question is, how does the prospect risk is matter? Okay. आपका prospect risk किस तरीके से मैटर होगा, तो उसका अगर हम देखें कि तो उसके हमने जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि अगर कोई भी वेल फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ सी पे जस्ट लाइक कोई कमर्शियल एक्टिविटी या कोई ड्रिल करते हैं, तो इट कॉस्ट वेरी expensive to drill the well in North Sea. ठीक है, so the world unexplored basin there are 20 to 50% that contain hydrocarbon, but the only 10% drillable target will contain oil. but 10% आपके चांसेस होते हैं कि जिसमें आपके रिस्क जो है, आपका रिस्क फैक्टर जो बात करके आपके कोई भी अनएक्सप्लोर्ड बेसन होते वट एवर, वहां पर आपका जो रिस्क फैक्टर है, जो प्रोस्पेक्ट रिस्क की बात की गई, वो 10 to 50% के आसपास होता है। वहां पर ज्यादातर आपके ज्वाइंट होते हैं गवर्नमेंट, नेशनल कंपनीज और आपके इंटरनेशनल कंपनीज, वो उसके साथ क्या क्या बिडिंग में या उसमें वो करती है। ठीक, जब आपका कोई भी एक हम कोई भी एक्सप्लोरेटरी वेल ड्रिल करते हैं, then the risk factor, prospect risk factor is a 10%. So what happens? Uh, so what can we see in this figure? That the blue one is show the drilling cost. That is the drilling cost in US dollar 1000. ठीक है, ऐसे ही है ना मेरे ख्याल से। ना यूएस का नॉट 1000, यूएस कॉस्ट है 00, इस तरीके डॉलर कॉस्ट है। ठीक है, एक साइड पे आपके कॉस्ट ऑफ डॉलर है, वाई एक्सिस में क्या है कि आपकी डॉलर कॉस्ट है, फिर उसके बाद क्या क्या कि ईयर्स पाई है। ठीक है, जैसे जैसे उसकी कॉस्ट इंक्रीज होती है। ठीक, तो उसमें बताए, और पिंक वन है वो आपकी वो बता रहे हैं ऑफशोर की ड्रिलिंग कॉस्ट बता रहे हैं, और ब्लू वन है वो आपकी ऑनशोर की बता रहे हैं। ठीक है, so we can see that because the drilling is quite very expensive uh, in offshore, it require input of the foreign exchange which many developing country cannot be afford. ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट को हम ऑफशोर ड्रिलिंग की तरफ जाए, तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल पड़ेगा कि कम जो हमारी जो नेशनल या कंपनियां हैं ओजीटीसी या पीपीएल के लिए, उनके लिए अगर फर्स्ट को वहां पर उन्होंने अगर इस तरह के ड्रिल की अगर एक वेल भी ड्रिल के गया, तो कंपनी को बहुत ज्यादा लॉसेस आ सकते हैं। या तो लॉसेस वो अगर ओजीटीसी हुई, तो वो तो या तो गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। अगर वो पीपीएल टाइप की आई कंपनी, तो उसको लॉसेस की सूरत में उसको ये करना पड़ेगा, या तो अपनी फील्ड को वो जो भी है उसको क्या कहते हैं, जो फील्ड है उसको या सेल आउट करना पड़ेगा, या तो एम्प्लॉय को कट डाउन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से उनको रिस्क फैक्टर दे हैव टू फेस अबाउट इट। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इस तरीके से शो करना। सो दैट फिगर शो करे जो ड्रिलिंग कॉस्ट है, ये आपकी स्पेशली फॉर द एक्सप्लोरेटिव वेल कॉस्ट की वो शो किया गया है। ठीक है, इन जर्नल। सो ऑफशोर ड्रिलिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन द ऑनशोर ड्रिलिंग। ठीक है, तो मैं ऑफशोर की ड्रिलिंग आपकी लैंड ड्रिलिंग से ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक,
फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, आपका आते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिस्क। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट रिस्क में क्या होता है, इन मोस्ट लीगल सिस्टम आउटसाइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, that subsoil oil and gas or with all other mineral are the property of the state। ठीक है, ये तो हर जगह पे, नॉट ओनली यूनाइटेड से, इन पाकिस्तान और वाट एवर, मैंने कहा कि जो भी आपके, जो भी जमीन के अंदर जो भी मिनरल्स मिलेगा, तो वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। वाट एवर, अगर आपके पास जमीन है, वो है, उसके नीचे सोना मिले या ऑयल मिले, गैस मिले या कोयला मिले, वो दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। ये रूल है। ठीक है, so therefore, if an oil company wishes to explore the oil and gas, an agreement must be signed between the गवर्नमेंट एंड द कंपनी। अगर इसी तरीके से कोई भी ऑयल एंड गैस कंपनी कोई भी एक्सप्लोर करती है, कोई भी अपने, तो उसके लिए क्या, वो लीज होता है। ठीक है, लीज क्या होता है, वो लीज करते हैं, और लीज जो होता है वो एक एग्रीमेंट होता है, दैट इज अ साइन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कंपनी के बीच में वो साइन होता है। फ्रॉम दैट वन, दैट वे दे हैव टू राइट टू एक्सप्लोर दैट एरिया। ठीक, so among in many aspect of operation covered by the government, this is how the profit to be divided। तो उसी तरीके का फिस्कल टर्म ऑफ द एग्रीमेंट, तो उस हिसाब से क्या कहेगा कि जिस तरीके का एग्रीमेंट वो साइन हो, उस हिसाब से आपका जो गवर्नमेंट का जो भी, जो अगर फर्स्ट कोई भी आपके रिजर्व मिलता है, तो डिसाइड होता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो किस तरीके से डिवाइड होगा। सो दैट इज बेस्ड ऑन द फिस्कल टर्म एंड आफ्टर, जो आपका जो फिस्कल में जो मालियाती साल होता है, उसमें वो डिसाइड करते हैं वो प्रोस्पेक्ट, जो भी आपको तो वो प्रॉफिट किस तरीके से शेयर करेंगे, वो गवर्नमेंट एंड द कंपनी के बीच में होगा। ठीक है, नॉट द पर्सन हु इज लिविंग जहाँ उसकी जमीन है उसके बीच में नहीं। ठीक, the problem is that the division must be made in ignorance of what is divided, since the extent of oil or gas reserve। तो सारा का जो प्रॉब्लम जो आते हैं, इश्यूज वगैरह, वो एक इसकी वजह से है कि इसको डिवाइड करने का, कि आपको जो भी ऑयल गैस जो भी हिडन रिजर्व आपके अंडरग्राउंड है, उसको किस तरीके से करें। वंस द ऑयल हैज बीन डिस्कवर्ड एंड प्रोडक्शन बिगिन, द बार्गेनिंग पावर मूव स्ट्रांगली इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें भी कभी कभी ये होता है कि हमेशा गवर्नमेंट की तरफ बार्गेनिंग वगैरह हो जाती है। ठीक है, अगर रिस्क आ जाता है वहां पर, तो या तो वो कंपनी को बेयर करना पड़ता है। इस तरीके से जब ऑयल एंड गैस मिलता है, वहां पर हमेशा वो गवर्नमेंट की तरफ से फायदा आ जाता है। ठीक है, तो वहां पर वो बार्गेनिंग करना शुरू हो जाती है, तो एक स्ट्रांगली जो फेवर आता है वो गवर्नमेंट के पास आना शुरू हो जाता है कि वंस द ऑयल एंड गैस डिस्कवर एंड प्रोड्यूस। So this has given a rise to the concept of splitting bargaining, whereby the government began to try and squeeze in better terms from the agreement। तो वहां पर गवर्नमेंट क्या होता है, उसको स्क्वीज करना शुरू हो जाती है, वो बड़ा बार्गेनिंग करना शुरू हो जाती है कि दे गेट हाउ टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो वो कंपनियों के साथ, so one person is adamant, he remarked as that a small fine equals a happy landlord and the large fine equal to unhappy to the landlord। अगर स्मॉल फाइंड आती है तो वो हैप्पी कर देती है लैंडलॉर्ड को, अगर लार्ज आती है तो अनहैप्पी कर देती है लैंडलॉर्ड को। दिस इडियम आई डिडंट गेट इट, बट आई हैव टू फाइंड इट आउट कि इसका मतलब क्या है, तो आई हैव टू फाइंड अबाउट इट। पर ये होता है कि अगर वहां पर जो भी, अगर चलो ये तो आपके है कि अब जो बीच वाला पर्सन है कि जैसे लैंडलॉर्ड हुआ, उसको क्या मिलेगा, तो उसको क्या होता है कि उसको एक हम कहें कि सिंपल उसको एक तरीके से उसको रेंट मिलेगा। ठीक है, वो जमीन वगैरह उसकी है, तो वो उसको कंपनी उसको एक्सप्लोर करने के लिए या वाट एवर के एक्सप्लोर या प्रोडक्ट की एक उसको रेंट देती है। ठीक है, तो इस तरीके से उसको वो एक रेंट मिलेगा। ठीक, मगर उसको वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक, उसकी जमीन पे किया वो क्या, उसको एक सिंपल रेंट मिलेगा।
फिर उसके बाद आता है कि हमने एक प्रोस्पेक्ट रिस्क की बात की, फिर उसके बाद आपकी कॉन्ट्रैक्ट रिस्क की बात की। कॉन्ट्रैक्ट रिस्क में हमने कहा कि देयर इज टसल बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑनर, गवर्नमेंट एंड ऑनर के बीच में। पहले तो ये तब टसल शुरू होती है जब द ऑयल एंड गैस इज प्रोड्यूस। अब ऑयल एंड गैस जब प्रोड्यूस वहां पर उनकी टसल होना शुरू हो जाती है। ठीक, वहां पर अगर वो गवर्नमेंट में स्टैंड होगा तो वो तो एक बड़ा अच्छा टेस्ट है। अदरवाइज कोई इस टाइप की कंपनी आएगी वो उस गवर्नमेंट को भी घुमा देगी, पता ही नहीं चलेगा। ठीक, तो अगर उस कंपनी के या उस कंट्री जब आप उसको ब्राइब देना शुरू कर दी तो खामोश हो जाएगा, चलो ठीक ब्राइब मिल रहा है, तो उसको एक एग्रीमेंट उसके फेवर पे चला जाएगा। ठीक है, ये हमारे मुल्क में ज्यादातर इस तरीके के इंसिडेंट हो जाते हैं। So commercial risks. So there are two type of commercial risks involved in petroleum exploration. First, the geology may turn out to be less than favorable. या तो आपकी जियोलॉजी है वो लेस फेवरेबल है, एक उसकी वजह से आपका कमर्शियल रिस्क आता है। ठीक है, और and after all, the geology and geophysical survey suggested they may be underground. ठीक है, the development decision must be made on the basis of data from the only a one well, the wildcat well. The information may be misleading and the geology much more fractured than believed. This result is the cost may be much bigger or volume much less than expected, thereby so undermining the profitability of the field. तो मैं फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि आपका कमर्शियल रिस्क इज जस्ट लाइक गोज टू द जियोलॉजिकल, कि आपने जियोलॉजिकल सर्वे की वो की, आपको मैं जोन ये सब लेस फेवरेबल बना इस टाइप के फ्रैक्चर टाइप के। अब फ्रैक्चर टाइप के जो आपके जो जोन मिलते हैं वो एक थोड़ा सा मन एक अनसर्टेनिटी लेके आते हैं कि आपको फ्रैक्चर में पता नहीं, आपने अब एक वास्ट एरिया आपने वहां पर ड्रिल किया वेल, वाइल्ड कैट वेल, वहां पर फर्स्ट को वेल आपका या तो प्रोस्पेक्ट मिल गया, अगर वहां से आपको प्रोडक्शन आपने स्टार्ट किया, आपने कहा हाँ अभी इतना है, तो इतनी वो आपके ज्यादा नहीं है क्योंकि वो फ्रैक्चर्ड है वगैरह है, इसकी वजह से या वहां पर आपको न मिले, तो बस मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन की वजह से इट माइट बी इफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फील्ड। आपकी जो फील्ड की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इफेक्ट है। प्रॉफिट तो आ सकता है, आपने सोचा कि आपको इतना प्रॉफिट मिले और वो प्रॉफिट आपको मिल नहीं रहा, जो आपको एक आपने रिक्वायर्ड आपने एस्टिमेट किया था कि इतना आपकी प्रोडक्शन मिलेगी आपकी, बर्फ फर्स्ट करो के आपने एक फील्ड डिस्कवर की के आपने देखा कि यहाँ से आप 10,000 बैरल के हिसाब से प्रोड्यूस करेंगे पर डे के हिसाब से। ठीक है, मगर आपने जब आपने ये आपने एक्सपेक्टेड किया था बिफोर ड्रिलिंग, आपने कहा चलो ठीक है, जब आपने ड्रिल किया वो किया तो आपको वहां से जो आ रही है प्रोडक्शन वो 2,000 या 3,000, तो आपकी प्रोडक्शन बट इट विल इफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी, जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं मिल गई। ठीक, तो दिस इज कम इनटू द categorized into the commercial risk. Okay. ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी मार्केट कंडीशन। आपके हमने दो रिस्क है, एक तो आपके आगे जियोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा आ गया था मार्केट कंडीशन may not be expected। ठीक है, तो ऑयल प्राइसेस आर नोट टू बी एक्सट्रीमली वॉलीटाइल। आपकी ऑयल प्राइसेस है वो बड़ी एक वॉलीटाइल किस्म की है, एक कभी आपकी प्राइस आपकी एक ज्यादा होती है पीक पे होती है, कभी वो प्राइसेस एकदम कम होना शुरू होते हैं because of the long lead time in petroleum exploration and development. Uh, because of the long lead time in petroleum exploration and development, when an oil field is brought online for the production,
the oil price may be lower than the expected, but आपने exploration के ऊपर इतनी आपने और खर्चा किया, वो किया, exploration is a major chunk आपकी जो के कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, आपने फील्ड को आया किया, वो किया, जब आपने प्रोड्यूस किया तब देखा कि अचानक से ऑयल की प्राइसेस फॉल डाउन होना शुरू हो गई आपके, क्योंकि हमेशा जब एक ऑयल प्रोड्यूसर होता है वो कहता है कि देते हैं कि जितनी ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होगा उतनी प्राइस ज्यादा होगी, दे कैन गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। फिर जब से ऑयल की प्राइसेस कम होना शुरू होगी, जैसे हम कहें कि 2020 में तो वहां पर तो सारी की इस टाइप की एक्टिविटीज बंद हो गई थी, तो जब ऑयल की प्राइसेस कम हो जाती तो इट आल्सो समटाइम हिट द कमर्शियल मार्केट को, वो भी इसको हिट करना शुरू हो जाती है, ठीक। So on the other hand, the cost could be the higher than the expected because of inflation in engineering and procurement of raw material and equipment, such as the cost of product in the past several years. तो एक तो सेक्टर आपका ये हुआ कि आपका एक मार्केट पे आपकी यहाँ पर दो चीजें की डिस्कस हुआ, एक तो ये हुआ कि ऑयल प्राइसेस के ऊपर आपने बड़ा एक लॉन्ग पीरियड टाइम है कि आपने पहले लैंड को एक्वायर किया, फिर आपने वहां पर उसको डेवलप किया, फिर आपने वहां से एक्सप्लोर किया और फिर आपने वहां से प्रोड्यूस किया, ठीक है। पीरियड है लॉन्ग पीरियड टाइम, आपने जब प्रोड्यूस करना शुरू तो ऑयल की प्राइस कम होना शुरू हुई, ठीक है। तो व्हाट यू एक्सपेक्टेड you what you think expect you didn't expect it, okay। फिर दूसरी तरफ क्या हो जाता है कि आपके इन्फ्लेशन रेट की वजह से आप, जैसे हमारे यहाँ क्या हुआ, अचानक से इन्फ्लेशन रेट इतना हाई हुआ कि एक साल के अंदर ही अंदर के पे हम के एक साल में जो आटा आपको 60 या 70 रुपए किलो मिलता था, वो अब 160 का या 180 रुपए किलो मिल रहा है, ठीक है। ये सिंपल में एकदम से इन्फ्लेशन। इसी तरह से इक्विपमेंट की बात करें, इसी तरह से आपके इक्विपमेंट वगैरह मशीनरी, कोई भी रॉ मटेरियल है जो प्रोक्योरमेंट के, जो आपके, अब आप में से कुछ स्टूडेंट को दे हैव नोटिस अबाउट इट, उनको नैनो पार्टिकल चाहिए था अपने वो FIP प्रोजेक्ट के लिए, हाउ डिफिकल्ट यू कैन ऑब्टेन इट अबाउट, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट लाइक पीक, मना शिपिंग वगैरह आपकी प्रोक्योरमेंट की हुई कुछ चीजें उसको क्या कहते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, मना पहुंच नहीं रही आपके पास, मना एक आपकी वो डॉलर की आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से वो इफेक्ट होना शुरू हुई, जो आपकी शिपिंग जो भी समटाइम दे फेसिंग अबाउट इट। तो रीजन यही है कि हमारा जैसे कॉस्ट बढ़ने की वजह से एकदम से इन्फ्लेशन रेट होने की वजह से आपकी कंट्री के पास इतना वो क्या कहते हैं, हमारे पास वो रेवेन्यू नहीं है कि हम क्या कहते हैं सिंपली एक इंपोर्ट कर सके, जिसकी वजह से आप क्या, जैसे हमने क्या कहती इक्विपमेंट या मशीनरी जो भी हम इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, जैसे कार असेंबली तो तब कैसे बनती है, कार असेंबली प्लांट तो तभी बनेगा क्योंकि आप मशीनरी जो भी ईच एंड पार्ट आप इंपोर्ट करते हैं, उसमें वो व्हील से लेकर आपके डैशबोर्ड से लेकर सीट कवर से लेकर ईच एंड एवरीथिंग इज असेंबल्ड, तो सॉरी इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं आप उसको असेंबल कर, जब आपके पार्ट्स ही महंगे कर हो गए तो आप उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो इंपोर्ट नहीं कर सकते तो जाहिर है शट डाउन होगा। इसी तरीके से मोबाइल का भी यही हिसाब किताब हुआ है कि आप मोबाइल के लिए कैमरा एंड उसकी क्या कहते हैं ग्लास का हुआ, उसका प्लास्टिक कवर हुआ, नथिंग इज मेड इन लोकली, हर चीज आपको हम वो इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट करने से क्या हुआ कि अब वो सारी की सारी खसारा हो गया, माना आप वही जो चीज मैं बता रहा था कि कौन सा बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट हम किस पे चल रहे हैं, डेफिसिट पे, डेफिसिट में वी आर इंपोर्टिंग मोर गुड्स एंड आवर एक्सपोर्टिंग इज नेग्लिजिबल। तो उसकी वजह से आपका होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट को ऐसा भी होता है कि आपने वो इंपोर्ट किया, वो किया, आपने यहाँ पर मोबाइल बनाया, वो किया, फिर आप उसको
कहीं दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक द इंडिया इज डूइंग अबाउट इट। कि उन्होंने अब क्या हुआ कि आईफोन है तो आईफोन का भी वहां पर जैसे एक असेंबलिंग प्लांट बनना शुरू, दे आर इम्पोर्टिंग, अब वो असेंबल पूरा का पूरा वहां पर होगा, तो इस तरीके। बट दे थिंक अबाउट कि अभी तो हम शायद इम्पोर्ट सारी वो कर रहे हैं ये इनके पार्ट के, बट 2028 या 2000 के बाद हम वी हैव टू ऑन प्रोड्यूस इट, क्योंकि जो जो चीजें यहाँ पे चाहिए, कैमरा हुई आईफोन की या रैम हुई वॉट एवर, दैट थिंग वी कैन प्रोड्यूस बाय आवर ओन, हम खुद प्रोड्यूस करेंगे, जैसे उसकी कॉस्ट को कट डाउन करें जो इम्पोर्ट वाली थी। तो जब आप एक्सपोर्ट करते हैं उसका रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। और उसको अगर हम कोई भी कार यहाँ पर बनाकर उसको बनाकर अगर आप किसी भी हम वो एक्सपोर्ट कर देते हैं किसी अफ्रीकन कंट्री में, तो वहां से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी एक तरीके का। बट क्या हुआ कि आपके इन्फ्लेशन की वजह आपकी कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई, कोई मेरे का डच डिजीज वाला हिसाब किताब, कि आप उसको क्या कहते हैं, वो किसी अफ्रीकन मार्केट में एक सिंपल सी अल्टो कार वहां पर एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां पर वो आपको कार पड़ जाती है, आप समझे कि आई जस्ट कैन गिव दैट दैट कार बिकम आपकी पड़े वैसे $20,000 की आपको वहां पर पड़ी, ठीक है। आप केनिया या तंजानिया के पाकिस्तान जो असेंबल करके काम वहां पर एक्सपोर्ट की, $20,000। उसी टाइप की सेम गाड़ी अगर वही गाड़ी या तो क्या कहते हैं इंडिया वो एक्सपोर्ट कर रहा है वहां पर कोरिया में, वो सॉरी केनिया या तंजानिया में, वही गाड़ी उनको वो पड़े वहां पर 10,000 की, तो विच कार दे चूज द बाय इंडियन या वॉट एवर दे बाय द ईरानियन, जो है उनका भी कार सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेहतरीन है, तो वो उसकी गाड़ी को पसंद करेंगे क्योंकि वो उनको चीप पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी, ठीक। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट कि आपकी तो इसकी कॉस्ट बढ़ने की वजह से तो कंपनी का जो मेजर क्या कहते हैं अपना वो एक्सपेंडिचर, उसकी बारे जो पहले चीज उसको क्या कहते हैं इक्विपमेंट वगैरह जैसे ड्रिल पाइप है सिंपल, पहले अगर वो उसको ड्रिल पाइप भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं या वो तो पहले वो सब जो एक एक पाइप खाली वो सिर्फ आप समझिएगा कि $1,000 का पड़ रहा था, ठीक। आपका इन्फ्ले वो पाइप अब $1,000 की वजह से वो अब $1,800 का पड़ गया, बट कॉस्ट वगैरह इट आल्सो इफेक्ट प्रॉफिट ऑफ द वो भी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट करना शुरू हो जाती है आपकी इन्फ्लेशन कॉस्ट, ठीक। फिर उसके बाद आपका आ जाता है एक्सप्लोरेशन इश्यू ऑफ इंटरेस्ट। So there are number of exploration issue of it. The first is increasing the access of exploration. Okay, the oil shock in 1986. The third oil shock in 1986. थर्ड oil shock in 1986 की बात करें अब देखें इसमें क्या हुआ oil shock की वजह से। अच्छा, अभी मैंने इसको गूगल करके कि ऑयल शॉक क्या हुआ था कि from November 1985 to July 1986, the oil prices fell from the 30 US dollar barrel to become the 10 barrel। आपकी क्या हुआ ऑयल की प्राइस बहुत शार्पली डिक्रीज होना शुरू हुई, 30 बैरल से 10 बैरल, कंपेयर विद द करंट dive from the higher above $120 last June to around 45 barrel for the mid March। तो बड़ा क्या हुआ कि लास्ट जून था, उससे पहले जो लास्ट जून की बात करें तो वो 84 के पहले की बात, जब आपका $120 था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके मिड मार्च बना, ये तो जून की जुलाई में हुआ था, उससे पहले जो मिड जून मार्च तक तो ऑयल की 35 बैरल थी, ठीक है।
तो अचानक भाई इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन हुई, कहाँ 120 था 1 साल पहले की बात की थी उसने, फिर उससे 2 महीने पहले की बात की, बात जुलाई की वो बात कर रहा है, मार्च की वो बात कर रहा है, ठीक है। 2 महीने पहले की बात की थी उसने, 2 या 3 महीने पहले की बात की। फिर अचानक से जुलाई में जो प्राइस थी वो एकदम से $30 से होती $10। तो माने दिस वन इज आल्सो द एक्सप्लोरेशन इश्यू ऑफ द इंटरेस्ट की वजह से। तो उसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है, कौन सा आ जाता है, the first is the increasing access to the exploration acreage। acreage आपकी हम सिंपली आपकी जनरल, ये आपका एक जनरल टर्म होता है, डिस्क्राइब करता है, आइडेंटिफाई द लैंड सब्जेक्ट टू ऑयल एंड गैस दी। वो जमीन जहाँ पर ऑयल एंड गैस की जमीन के ऊपर लीज मिली हुई होती है, तो उस चीज को एक्रेज को कहते हैं, ठीक है। So it's usually bear the amount of land that is subject to an agreement for post transition। तो भाई जो एरिया आपकी क्या कहते हैं एग्रीमेंट पे जो आपको प्रपोज किया गया है उसको आप एक्रेज करते हैं लीज के लिए, ठीक। एक्रेज, ठीक। बस है सर आज के लिए। अच्छा, तो इतने थक गए क्या आप लोग? चलो इस तस्वीर तक हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम करते हैं, ठीक है। फिगर को समझ, एक्रेज के ऊपर डिस्कस है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपकी increasing availability of exploration acreage। तो व्हाट हैपेंड, जी जी बस यही मैं स्लाइड करके फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ मैं ऐड कर दूं। तो टेक्निकली चेंज हैज बीन दैट इट इज हाउ it is now possible to drill and operate in a much deeper water, ठीक है। The ability to operate ever deeper offshore means that new acreage become available for the exploration, ठीक। An excellent example has been operation offshore the West Africa where a large discoveries are being made, ठीक। अब यहाँ पे एक्रेज करें कि आपको फर्स्ट करो कि आपको एक ऑफशोर वेल ड्रिल करना है, ठीक है। ऑफशोर वेल ड्रिल करने के लिए आपको जो लीज मिली थी वो आप सब्जेक्ट के 15,000 के आसपास के एकड़ तक आपको, फीट तक आपको उसकी डीप मिली थी, लीज मिली थी, ठीक है। तो आपको वहां पर आपने ड्रिल करके 12,000 तक तो आप गए, तो उसके बाद अगर आप तस्वीर को देखिए इलाज करके, तो उसके बाद आपने क्या, एक एग्रीमेंट के आपने और ज्यादा एक्सेस मिली, आपने एग्रीमेंट के दे, यू गो फॉर द मोर डीपर और यू गेट अ मोर प्रॉफिट एंड सच थिंग। तो आप और ज्यादा करने के, क्योंकि आपकी सब कुछ वही था, आपकी वहां पर प्लेटफॉर्म लगा हुआ था ईच एंड एवरी को, पर आपको वेल ड्रिल करके आपने 12-13 हजार से करे, तो यू गेट बड़ा उसको कॉस्ट को किस तरीके के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन है। तो आपने और ज्यादा डीपर पे 17,000 पे गया, आपको 20 आपने कहा कि पॉसिबली आपने वहां पर मिल जाए, तो आप बहुत डीपर पे गया, आप बहुत डीपर वे पे, तो ये उस एरिया में ज्यादातर जहां पर आपकी ज्यादातर अच्छी क्वांटिटी में हो, या तो गल्फ वाले पर्शियन गल्फ की एरिया हो, या तो क्या कहते हैं वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, नाइजीरिया हुआ, गबूर हुआ, इन कंट्रीज के एरिया में आपको एक अच्छे प्रोस्पेक्ट टाइप के रिजर्व मिलते हैं, ठीक है। तो समटाइम यहाँ पर एक चीज तो ये होता है, कभी कभी आपके पॉलिटिकली हॉस्टाइलिटी की वजह से भी आपको चेंज करना पड़ता है कि फर्स्ट करो कि कोई कंट्री है कि वो अपना ओपन एक्सेस ना दे, ठीक है। जैसे आपको 1980s तक वो जितने भी जो ज्यादातर जो फील्ड थी, मैंने उस वक्त सोवियत यूनियन की बात कर रहा था, तो वहां पर वो सारी की सारी नेशनल कंपनियों को अलो थी, ठीक है।
वहां पर कोई भी इंटरनेशनल कंपनी नहीं, वहां पर जो भी चीजें करती थी सारी नेशनल, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था वो नेशनल के पास ही जाता था। बड़ा वो किसी को वहां पर किसी भी बाहर की कंपनी वहां पर बिडिंग वगैरह इस तरीके से नहीं करती थी। फिर क्या, जब वो कंट्री कोलैप्स हो गया, ये कजाकिस्तान, अजरबैजान, वहां पर फिर दूसरी कंट्री को लिवरेजेस मिलना शुरू हो गए। नाउ एक्सप्लोर बेसन है या अनएक्सप्लोर बेसन है, अंदर कंट्री के वहां पर आकर वो बिडिंग करे। जब बिडिंग होती थी, अब बिडिंग में क्या, कंट्री बिडिंग करते थे तो हर कोई पैसा लगाता था, तो जिसकी बिडिंग सबसे ज्यादा होती थी तो उसको वो फील्ड गिफ्ट किया। तो बिडिंग का जो पैसा होता है वो भी गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। आपने बिडिंग की, वो पैसा गवर्नमेंट के जाता है। फिर उसके बाद एग्रीमेंट होते हैं, वो होते हैं, उसमें फिर प्रॉफिट शेयर करना, वो सारा का सारा वो हो जाता है, ठीक। ओके, यहाँ पर हम करते हैं ऐड। वो सर कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। क्या समझ में आया है?